बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साइट जो लाहौर हाई कोर्ट का बुलेटिन है उसको मैंने स्टार्ट किया हुआ है, जो फोर्टनाइटली होता है, मतलब हर 15 दिन बाद लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है। तो उसको मैंने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें पार्ट 2 तक मैं 2 लेक्चर मतलब रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और ये तीसरा और लास्ट लेक्चर है पहले फोर्टनाइटली बुलेटिन का, 15 दिन वाले का। ये 1 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक के लेक्चर्स जो हैं इसमें वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब जितने भी केस लाज इसमें आए हुए हैं, और वो आपको अपने हिसाब से, मतलब जितनी मुझे इसकी समझ आई है उसका मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं जी। सबसे पहले फैक्ट्स। By dint of this criminal petition, the petitioners have called in question the order passed by the High Court of Sindh, Circuit Court Ladkana in criminal bail application, whereby the petitioner's application for pre-arrest bail was dismissed and ad interim bail order was recalled in FIR lodged अंडर सेक्शन 302 एंड 34 PPC एट पुलिस स्टेशन। अब हुआ ये है कि पिटिशनर ने पिटीशन फाइल की है और उसकी जो प्री अरेस्ट बेल है वो डिसमिस हो गई है। FIR जो है वो लॉन्च की गई 302 और 34, 302 कत्ल और 34 कॉमन इंटेंशन। वेदर बेनिफिट ऑफ डाउट कैन बी एक्सटेंडेड टू द अक्यूज्ड इवन एट बेल स्टेज, कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो अक्यूज को दिया जा सकता है बेल स्टेज पर भी। पहला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल ग्राउंड? रीजनेबल ग्राउंड से क्या मुराद है? इट इज़ अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन of justice in criminal law that every accused is innocent until his guilt is proved, and this benefit of doubt can be extended to the accused even at the bail stage if the facts of the case so warrants. The basic philosophy of criminal jurisprudence is that the prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt, and this principle applies at all stages including pre-trial and even at the time of deciding whether accused is entitled to bail or not, which is not a static law but growing all the time, molding itself according to the exigencies of टाइम। अब इसमें इन शॉर्ट उसने यही कहा है कि जो बेल स्टेज बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमेशा अक्यूज को मिलता है और प्रोसिक्यूशन ने अपना केस रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड प्रूव करना होता है, और ये हर रूल जो है वो हर स्टेज पर अप्लाई होता है, प्री ट्रायल पर भी, इवन एट बेल स्टेज पर भी। In order to ascertain whether reasonable grounds exist or not, the court should not probe into the merits of the case but restrict itself to the material placed before it by the prosecution to see whether some tangible evidence is available against the accused persons. Reasonable grounds are those which may appeal to a reasonable judicial mind, as opposed to merely capricious, irrational, concocted, and or illusory grounds. However, for deciding the prayer of an accused for bail, the question whether or not there exists reasonable ground for believing that he has committed the alleged offense cannot be decided in a vacuum. अब reasonable ground क्या होती है? जो उसके वर्जन को प्रूव करे, मतलब अगर वो जो है उसमें, अगर आपने कभी बेल एप्लीकेशन लिखी हो या पढ़ी हो तो उसमें ग्राउंड लिखी होती है कि जो है वो अक्यूज है वो मुअज़्ज़ज़ शहरी है और जो है इसका वो मतलब सज़ा याफ्ता मुजरिम नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका नहीं है मौजूद, और वो जो है उसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, रीज़न नहीं है। इस टाइप की वो ग्राउंड्स लिखी जाती हैं जो कि उसके वर्जन को प्रूव करती हैं। नेक्स्ट केसला है जिसमें थ्रू द प्रेजेंट डिसीजन ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट डिस्पोज्ड ऑफ द टाइटल्ड इंट्रा कोर्ट अपील filed under section 3 of the law reforms ordinance 1972 as well as intra court appeals bearing members so and so being outcome of the same judgment passed by a learned single judge of this court. Whether a constitutional petition is maintainable where the relationship between the employee and employer is not governed by any statutory rules of service. अब ये सर्विस लॉ का मैटर है और इसमें सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन मेंटेनेबल है अगर रिलेशनशिप जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के दरमियान हो वो स्टैट्यूटरी रूल्स ऑफ सर्विस से मतलब कनेक्टेड ना हो, कि वो रूल्स ऑफ सर्विस में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई और फिर भी उनका वो रिलेशन कोई है, तो उस हवाले से ये है। पढ़ते हैं आगे। वेयर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज़ आर नॉट रेगुलेटेड बाय अ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, द सर्विस एम्प्लॉयमेंट ऑफ
employees is to be governed by the principle of master and servant, and the employees of such entity cannot evoke Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 for alleged violation of terms of service employment. An employee who is not governed by statutory rules cannot approach High Court in its constitutional jurisdiction. वो कहता है कि जो एम्प्लॉय जो है वो गवर्न नहीं किया, मतलब रेगुलेट नहीं कर रहा स्टैट्यूटरी रूल्स को, मतलब स्टैट्यूटरी रूल्स में उसके वर्जन के हवाले से कोई भी प्रोविजन अवेलेबल नहीं है, तो वो 199 के तहत रेट फाइल नहीं कर सकता, उसको ट्रीट किया जाएगा मास्टर एंड सर्वेंट के रूल्स के हवाले से। अगला है जी केस लॉ फैक्ट्स ड्यूरिंग scrutiny of refund claims of taxpayer. The department observed that input invoices were issued by the suppliers who had either been declared blacklisted by the concerned authorities or were non-existent at their given address with registration suspended status and issued show cause notices which culminated in passing of order in original whereby refund claims of taxpayer were rejected. Feeling aggrieved, taxpayer assailed said order in appeal before collector appeals, which was dismissed. Feeling dissatisfied, taxpayer filed second appeal before the appellate tribunal, whereby orders passed by four of below were set aside and appeal was accepted. And instant reference application. अब ये टैक्स की अपील है, उसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले उसमें ब्लैक लिस्टिंग के हवाले से। ब्लैक लिस्टिंग क्या होती है कि अगर कोई मतलब जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा होता, जिस तरह वो आईएमएफ है ना, वो ग्रे लिस्ट होती है उसकी और फिर वो वाइट लिस्ट होती है, इस तरह से सेल टैक्स में भी सस्पेंशन होती है, फिर ब्लैक लिस्ट होती है कि वो फिर सप्लाईज नहीं दे सकता जो भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होता है। Whether department is authorized to reject the tax credit of all the previously issued invoices on the sole reason that supplier was blacklisted subsequently. अब हुआ ये है कि उसका टैक्स क्रेडिट आ रहा था पीछे से सप्लायर का, लेकिन उसने टैक्स अथॉरिटी ने वो रिजेक्ट कर दिया कि उसका टैक्स क्रेडिट उसको नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट हो चुका है। Who has initial burden to prove that invoices have nexus with blacklisting or tax was not paid or deposited against the invoices. अब ये burden किसके ऊपर है कि वो invoices में जो वो टैक्स जो है वो डिपॉजिट नहीं किया गया था और उसका वो टैक्स क्रेडिट बनता था या नहीं बनता था, इस हवाले से। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21(3) ऑफ द एक्ट ऑफ 1990, एक्ट से मुराद सेल टैक्स एक्ट 1990 है, clarifies that the department is authorized to reject a refund claim based on invoices issued during the period of suspension and after consequent blacklisting, whether prior or after such blacklisting, by passing a speaking order after giving the registered person an opportunity of being heard. However, such power is not available to reject the tax credit of all the previously issued invoices on the sole reason that the supplier was blacklisted subsequently. Provision of Section 21(3) cannot be read in isolation. For refusing to entertain the invoices issued prior to blacklisting of supplier, the taxation officer has to establish through plausible evidence that the invoices have some nexus with the cause of blacklisting, that the supplier were conducting business as per law when the invoices were issued, the blacklisting order was passed due to the some subsequent defaults, and that order of blacklisting or suspension was reversed, being challenged by the supplier subsequently. The reasons or cause of blacklisting is to be correlated with the invoices intended to be rejected for the adjustment of tax credit or its refund. To prove the facts that invoices have nexus with blacklisting or tax was not paid or deposited against the invoices, burden is upon the revenue. However, this burden can be shifted upon the registered person claiming adjustment or refund of tax in case of tax fraud in accordance with the provisions of Section 237 of the Act of 1990, not by confronting merely that the supplier was blacklisted subsequently. Initial burden before shifting is to be डिस्चार्ज बाय द सेम रेवेन्यू। अब इसमें इन शॉर्ट हुआ यह है कि उस एक जो रजिस्टर्ड पर्सन था उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, उसने अपना टैक्स क्रेडिट क्लेम किया तो डिपार्टमेंट ने कहा कि जी वो तो ब्लैक लिस्ट है लिहाजा इसका टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। अब उन्होंने इसमें मतलब जस्टिस साहिबान ने ये कहा है कि जो डिपार्टमेंट है वो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो प्रूव करे कि वो ब्लैक लिस्ट जो किया गया है वो उन्हीं इन्वाइसेस की वजह से किया गया है या नहीं।
और अगर नहीं किया गया उन इन्वाइसेस की वजह से तो फिर जाहिर बात है उसका टैक्स क्रेडिट बनता है, क्योंकि उस टाइम पर तो वो एज पर ला काम कर रहा था। ब्लैक लिस्ट की रीज़न प्रूव करनी चाहिए कि वो किस वजह पर हुआ, और उस ब्लैक लिस्ट के बाद उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो इनवैलिड होगी। ब्लैक लिस्ट से पहले जितनी भी उसने ट्रांजैक्शन किए वो सारी की सारी वैलिड होगी। और अगर वो बंदा एडजस्टमेंट या रिफंड क्लेम कर रहा है तो फिर, और उसने कोई फ्रॉड नहीं किया तो फिर वो टैक्स पेयर प्रूव करेगा, अदरवाइज ये सारा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर है। नेक्स्ट है जी आपका दिस जजमेंट एग्जामिन्स द एक्सटेंट ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ local governments to utilize local governments development fund in absence of elected representatives, and that too far crying carrying out development scheme proposed by MNAs and MPs. Whether the chief ministers without approval of the cabinet can appoint administrators and assign them functions. अब चीफ मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकता है या नहीं, मतलब किसी को अपॉइंट कर सकता है या नहीं। वेदर एग्जेक्टिव ऑर्डर्स एलोकेटिंग ग्रांट्स टू MNAs एंड MPs फॉर डेवलपमेंट वर्क विद इन द डोमेन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज लीगल, कि क्या जो भी ग्रांट MNA या MPs को दी जाती हैं उनके डेवलपमेंट वर्क के लिए वो लोकल गवर्नमेंट की डोमेन में है या नहीं है। Appointment of administrators and assigning of functions and power by the chief minister without approval of the cabinet is without lawful authority. However, the functions not powers to be exercised by elected local government can be ratified and continued by the administrators appointed in accordance with the law. Any executive order allocating grants to MNA and MPA for development work within the domain of local government is declared illegal, and any regulation or law permitting allocation of such grant shall be unenforceable in view of section 4 of पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के जी पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर वो उसकी डोमेन में नहीं आती कि ग्रांट जो भी MPA या MNA को डेवलपमेंट वर्क के लिए दी जाती है, तो लिहाजा वो कहते हैं ये इलीगल है। The petitioner next आ गया जी the petitioner through this public interest litigation PIL has challenged the appointment of current Advocate General of Punjab on the ground that under Article 140 of the Constitution of 1973 the governor can appoint only such person as the Advocate General who is qualified to serve as a judge of the High Court. Article 195 fixes the retirement age of a High Court judge at 62 years. Since the present Advocate General is 73 years of age, hence ineligible for the office. चलो जी PIL उसने फाइल किया कि जो गवर्नर एडवोकेट जनरल है वो ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि हाई कोर्ट का जज बनने का अहल हो, और हाई कोर्ट की जज की जो रिटायरमेंट एज है वो 62 है, मतलब 62 तक वाला बंदा हाई कोर्ट का जज बन सकता है, उससे ऊपर वाला नहीं। तो फिर एडवोकेट जनरल 73 ईयर का, तो लिहाजा वह इनएलिजिबल है एज की वजह से। वेदर द रिटायरिंग एज मेंशन इन आर्टिकल 195 आल्सो अप्लाइज टू द एडवोकेट जनरल एंड एनी वन ओवर द एज इज डिस्क्वालीफाइड टू अपॉइंटेड एज एन एडवोकेट जनरल। अच्छा सवाल है कि वो अगर 195 में तो हाई कोर्ट के जज की रिटायरिंग एज लिखी हुई है ना, तो क्या वही रिटायरमेंट एज एडवोकेट जनरल पर भी अप्लाई होगी या नहीं होगी, और अगर उससे ऊपर का बंदा होगा तो वो डिस्क्वालीफाइड होता है या नहीं होता। व्हाट आर द एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स फॉर अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL के एसेंशियल रिक्विजिट क्या है, मतलब PIL कब फाइल की जा सकती है। द पोजीशन ऑफ द हाई कोर्ट जज एंड द एडवोकेट जनरल आर डिस्टिंक्ट, ठीक हो गया, दोनों अलग अलग पोजीशन है। There are a separate mechanism for appointment, remuneration, tenure, and removal from the post. Their responsibility differ as well. Article 141, the appointment of Advocate General, which is found in Chapter 3 of Part 4 of the Constitution, whereas Part 7 governs the judicature. Article 195 is in Chapter 3 of Part 7. Thus, the constitutional framework for the offices of Advocate General and the High Court Judge is completely different. Article 140 of the Constitution, which provides for the appointment of an Advocate General for a province as aforesaid, incorporates Article 193 2 only by reference. If the framers of the Constitution intended to prescribe the upper age limit for the appointment of Advocate General or to set the age retirement for him, they would have specifically said so. In Secretary, Ministry of Law, Parliamentary Affairs and Human Rights, Government of the Punjab and others versus Muhammad Ashraf Khan and others, PLD 2011, Supreme Court 7, the Honorable Supreme Court
ruled that under Article 140, a person appointed as Advocate General should meet the requirements for appointment as a High Court judge. However, this does not imply that he is subject to the same restrictions in other areas that the Constitution places on a High Court judge. अब इन शॉर्ट वो कहते हैं कि ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, जो एडवोकेट जनरल का होता है वो डिफरेंट है, और जो हाई कोर्ट के जज का होता है वो डिफरेंट है, और उसको अप्लाई होता है लेकिन एज इट इज़ अप्लाई नहीं होता। इसमें इतनी सी बात है, इसको पूरा पढ़ के वो सिर्फ कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, क्योंकि कंक्लूजन में भी सारा क्रैश आ जाएगा। The offices of the High Court Judge and the Advocate General is distinct and governed by different constitutional provisions. The retiring age mentioned in Article 195 for a High Court judge does not apply to the Advocate General, and anyone over the age is qualified to be appointed as an Advocate General. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी फैक्ट्स इंस्टेंट एंड connected civil provision and directed against consolidated judgment and decree of first appellate court, whereby appeals preferred by petitioner was dismissed and consolidated decision of court of first instance was affirmed in terms whereof trial court had dismissed suit for declaration instituted by the petitioner and decreed suit for specific performance brought by respondent number 1 seeking enforcement of alleged agreement to sell के ऊपर मामला है ये। whether in view of section 214 and 215 of the Contract Act 1872, where agent purchases the property subject of agency for himself or his own benefits, the same is obligated to seek principal's consent after acquainting the principal with all material circumstances. अब इशू क्या था कि जो सेक्शन 214 215 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के हवाले से वो उसमें एजेंट ने प्रॉपर्टी परचेज की है, और सब्जेक्ट ऑफ एजेंसी मतलब एजेंसी में उसकी ये टर्म्स एंड कंडीशन में था कि वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है उसने अपने लिए या अपने बेनिफिट के लिए, तो वो ये कंसेंट उसकी प्रिंसिपल की रिक्वायर्ड थी या नहीं थी। आफ्टर रिक्वेंटिंग विद प्रिंसिपल विद ऑल मटेरियल सर्कमस्टांसेस, मतलब प्रिंसिपल की नॉलेज में आने के बाद इसमें क्या हो सकता है। इट इज़ एस्टेब्लिश दैट नो स्पेशल परमिशन वाज आस्क्ड, प्रिंसिपल ने कहा कि उसने कोई परमिशन नहीं ली। थ्रू दो अटॉर्नी एडमिटेड दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1 हैज़ हिज नेफ्यू, नो एक्सप्लेनेशन हैज वाज प्रोवाइडेड टू शो दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1 वाज नॉट the descendant from the same ancestor and respondent number 1 was not related by blood. Notwithstanding this inadequacy, there is another fundamental lapse in performance of obligations by the attorney. Attorney has to prove that transaction was not for his benefit, which material issue was not proved, and instead it is established that the suit property was sold in return of the services rendered by the respondent number 1, which convincingly proved that attorney sold suit property for his own benefit. Evidently, the transaction carried out secured him for his comfort, residence, food, and care extended by the respondent number 1, which influenced the attorney and led to compromising his duties, responsibilities, and obligations toward the principal. The advantage benefit drawn by the attorney at the expense of the principal are established. These admitted facts constitute provisioning of tangible benefits and calls for the necessity of prior permission from the principal. No evidence was led to prove that money alleged received were paid to the principal attorney, not even alleged this fact. Hence, requirement of section 214 and 215 Contract Act were not met. मतलब उसने प्रॉपर्टी परचेज की और प्रॉपर्टी अपने बेनिफिट के लिए परचेज कर ली, उसमें उसने प्रिंसिपल की कंसेंट नहीं ली, क्योंकि उसने कहा कि जी वो प्रिंसिपल का नेफ्यू है। तो रिलेशन मैटर नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैटर करती हैं कि उसका परमिशन लेनी चाहिए थी, और अगर उसने परमिशन नहीं ली तो उसने वो जो प्रॉपर्टी ली है मतलब वो उसी के बिहाफ पर लेनी चाहिए थी, ना कि उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए या अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लेनी चाहिए थी। ठीक हो गया जी। आगे है आपका द रिटन पिटिशन लीगली एंड लीगैलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लर्नड सिविल जज इज असेल्ड, वेयर बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हैड बीन ordered against the judgment debtor, who according to the report of the bailiff obstructed in the execution of warrants of possession. एग्जीक्यूशन से रिलेटेड मामला है कि वो FIR बैलिफ गया एग्जीक्यूशन को प्रोसीडिंग को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और उसने उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की।
in the order of executing court for registration of FIR against the judgment debtor who allegedly obstructed in the execution of warrants of possession maintainable in eyes of law, whilst relying upon mere report of bailiff instead of holding any inquiry. अब पहला सवाल इसमें इशू ये है कि जो कोर्ट ऑर्डर की एग्जीक्यूशन की उसने वायलेशन किया तो उस वजह से उसको ऊपर एफआईआर होगी। पीपीसी में वो है ना एक प्रोविजन, एग्जैक्टली मुझे भूल गई है, लेकिन वो जो कार्य सरकार में मुदाखलत जिसे कहते हैं, तो उसने वो किया, उसके खिलाफ उसकी एफआईआर रजिस्टर करवाई जा रही थी। और दूसरा सवाल ये है कि बैलफ की रिक्वेस्ट पर वो हो सकती है या नहीं हो सकती, बजाय इसके कि वो इंक्वायरी होल्ड की जाए पहले, मतलब कि वाकई उसने ऑब्स्ट्रक्शन किया या नहीं किया, पहले ये प्रूव करना चाहिए। Procedure for execution of a decree order is provided in Order 21 of the CPC. However, in case of any resistance in the execution process, the court is empowered to proceed under Rule 98 to Order 21 of the CPC at the instance of the applicant to detain the judgment debtor or the person who was resisting or obstructing in the execution process only after such fact having been proved in a result of inquiry. Necessary steps should be taken in order to determine the correctness or otherwise of the report of bailiff relied upon before passing the order. The court may record statement of the bailiff, call upon him to submit affidavit to verify the correctness of his report, and summon the SHO concerned, or call for this report his report in order to satisfy itself about the correctness or otherwise of the report of bailiff, especially in case where whilst issuing warrant of possession, the SHO concerned was directed to provide police aid to the bailiff for execution of warrants of possession without any unpleasant incident. The order of the executing court relying upon the report of the bailiff without holding an inquiry for registering of an FIR against the judgment debtor who allegedly obstructed in the execution warrants of possession is not sustainable in the eye of law. मतलब सिर्फ बैलिफ की रिक्वेस्ट के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर उसको एफआईआर उसके ऊपर दर्ज नहीं की जा सकती, क्योंकि बैलिफ अगर एग्जीक्यूशन के लिए जाता है तो फिर उसके बाद वो अगर उस में ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो फिर पुलिस एड ली जाती है, और फिर इसलिए एसएचओ को डायरेक्ट किया गया कि वो पुलिस एड के जरिए जाए और इस एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करवाए, और अगर फिर भी वो नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ एफआईआर वाली प्रोसीडिंग हो सकती है। दो दिस रेगुलर सेकंड अपील, ये नेक्स्ट है, द अपीलेंट्स हैव challenge the judgment and decree for of the learned appellate court below who allowed the appeal, set aside the judgment and decree of the learned trial court, and dismiss the suit for specific performance of the agreement to sell to the plaintiff's appellant. Whether simple denial of execution of agreement to sell is sufficient or alleged, vendor must challenge the specifically by way of initiating criminal proceeding or through an independent civil suit. What are the requirements for a subsequent vendee purchaser to establish his claim to bona fide purchaser in case of judgment at variance of the learned two courts below, which is one to be preferred and on what grounds? अब इसमें सब्सिक्वेंट परचेजर वाला मामला, सब्सिक्वेंट परचेजर से मुराद है मतलब एक बंदे ने एक प्रॉपर्टी किसी को बेच दी, उसने आगे किसी को बेच दी, तो उसने बोनाफाइड वो परचेजर है या नहीं, उसके हवाले से रिलेटेड है। The defendant respondent number 1 to 4, though in their statement have alleged that the agreement and the receipt are fake, yet they have not specifically challenged the same either by way of initiating criminal proceeding or through an independent civil suit, even after taking preliminary objection in this regard. अब डिफेंडेंट ने कहा कि ये जो रिसीट है और एग्रीमेंट टू सेल है ये फेक है, लेकिन उसने इस फेक एग्रीमेंट टू सेल को किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया। The Honorable Supreme Court in this case, title Sajjad Ahmad Khan versus Muhammad Salim Alvi and other 2021 SCMR 415, held that in such an eventuality simple denial of a document being fake and fictitious is not legally sufficient unless same facts are proved and established on record. It is settled that a subsequent vendee purchaser has to establish by discharging the initial onus that he acquired the property for due consideration and thus is a transferee for value, meaning thereby that his purchase is for the price paid to the vendor and not otherwise. There was no dishonesty of purpose or trained or tainted intention to enter into the transaction while acting in good faith, and he had no knowledge or notice of the original sale agreement between the plaintiff and the vendor at the time of this transaction, with the latter reliance is placed on.
इतना बड़ा है, इसमें सिर्फ कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। सिंपल डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल इज नॉट सफिशिएंट, रादर alleged vendor must challenge that specifically by way of initiating criminal proceeding or through an independent suit। अब सिविल सूट है, मतलब उस वो सिर्फ ये कह देता है कि एग्रीमेंट टू सेल जो है वो फेक है, तो ये काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि उसको प्रूव करना, उसे चैलेंज करना चाहिए उस एग्रीमेंट टू सेल को, मतलब कैंसिलेशन में जाएगी या फिर रेक्टिफिकेशन में या रेसिशन में, जिसमें भी जाना चाहिए, लेकिन उसको चैलेंज करना उसके लिए ज़रूरी है। अ सब्सिक्वेंट वेंडी परचेजर हैज़ टू एस्टेब्लिश हिज क्लेम टू बी बोनाफाइड purchaser by discharging the initial onus that he acquired the property for due consideration, acted in good faith, and that he had not knowledge or notice of the original sale agreement। बोनाफाइड परचेजर जो सब्सिक्वेंट परचेजर है उसने यही प्रूव करना होता है कि वो उसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी परचेज की है, वो बोनाफाइड परचेजर है और उसे नहीं पता था कि वो पहले एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है किसी और के साथ। जनरली इन केस ऑफ जजमेंट्स एट वेरिएंस ऑफ द लर्नड टू कोर्ट्स बिलो, preference should be given to the judgment of the learned appellate court below, but it is not universal, rather both the judgments will definitely come in for comparison of their merits in the light of the facts of the case and the reason of which the two are different and contradictory। अब कहते हैं कि जनरली जो जजमेंट एट वेरिएंस हो, मतलब एक कोर्ट ने एक फैसला किया, फिर अपील में गए तो अपील ने दूसरा फैसला कर दिया, तो ज़रूरी नहीं होता कि उनको कंपैरिजन किया जाए, मेरिट्स देखा जाता है और उसके ग्राउंड देखे जाती हैं कि किस बेस पर फैसला किया, उसी को ही ऑन करना चाहिए। मतलब थर्ड फोरम पे जब जाएगी तो वो दोनों को देख के, ये लाजमी नहीं है कि वो किसी एक कोर्ट के वर्डिक्ट पे ही जाए, वो ऊपर वाली कोर्ट अपना फैसला भी दे सकती है वैसे। अगला जी है, इसमें मेरा ख्याल है लास्ट केस है। दो थ्रू दिस रिटर्न पिटिशन द पिटिशनर सीक्स क्वेश्चनिंग ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 419, 420, 468, 468, 471 and 109 PPC at पुलिस स्टेशन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIR ऑन कंप्लेंट। अब क्वैशमेंट ऑफ FIR के लिए वो पिटिशनर ने पिटिशन फाइल की है। What is the nature and scope of jurisdiction of FIA? Whether malafide must be pleaded with particularity. The nature and scope of jurisdiction of the FIA is governed by Section 3(1) and Schedule to the Act read with the preamble thereof, which embodies its purpose, object, and reads as follows. Whereas it is expedient to provide for the constitution of a federal investigation agency for the investigation of certain offences committed in connection with matters concerning the federal government and for matters connected therewith, it is hereby enacted as follows. It is well settled by now that although preamble to a statute is not operative part thereof, however, the same provides a useful guidance for determining the purpose and intention of the legislature behind the enactment. There is no cavil with the proposition that FIA has been established constituted for investigation of certain offences committed in connection with matters concerning the federal government and for matters connected therewith. Though the act of the FIA in terms of schedule to the act has been granted jurisdiction to take cognizance in respect of several offences under the Pakistan Penal Code 1860 PPC, which are cognizable by local police also, and as regards the allegation of malafide, suffice it to observe that it is well settled that malafide must be pleaded with particularity, wage and general allegation have no value in the eye of law। मतलब जब भी आप एलिगेशन लगाएंगे किसी के ऊपर तो वो पर्टिकुलरिटी लगाने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, जनरल नहीं लगाने चाहिए, जनरलिटी की कोई वैल्यू नहीं आएगी लॉ में। द नेचर एंड स्कोप ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ FIA is governed by Section 3(1) and Schedule to the Act read with the preamble thereof, which embodies its purpose, object the FIA in terms schedule to the Act has been granted jurisdiction to take cognizance in respect of several offences under the Pakistan Penal Code 1860, which are cognizable by the local police also, malafide must be pleaded with particularity and not in general। अच्छा जी, ये ख़त्म हो गया। अब इसमें ये जो पहला फोर्टनाइटली बुलेटिन, उसके बाद इसमें ये रिसेंट जो अमेंडमेंट है वो है, और ये कुछ आर्टिकल्स है, इनको मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, तो मे बी मैं पढ़ के इसको दोबारा कर लूँ, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से ये ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट की जो फोर्टनाइटली बुलेटिन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरे पास वैसे पूरे साल का है, तो अगला मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगी बुलेटिन इसका। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
अल्लाह हाफिज़।